Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Vectors in rDNA Technology. So this is the title of our presentation. Now contents: what is vector, types of vectors, features of ideal vector, vector plasmid, vector PBR322, vector PUC18, vector COSmids, vector Bacteriophage, vector TI plasmid, vector YAC, that is yeast artificial chromosome, and vector BAC, that is bacterial artificial chromosome. So this is the content of our presentation. Now first of all, see what is vector. I have defined here. Vector is defined as any DNA molecule, that is plasmids, COSmids, lambdaphages, used as a vehicle to artificially carry a foreign DNA into another cell where it can be replicated and or expressed. So this is the definition. So you have to see here, vector ये जो होता है ये क्या होता है, तो ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, लैम्ब्डाफेजेस फ्रॉम द वायरसेस, और ये क्या करते हैं, तो ये कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए का मतलब होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट. ये जो फॉरेन डीएनए है इसे हम कह सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट. वी कैन इंसर्ट दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर. So therefore this vector is a carrier, isn't it? तो इसको हम vehicle कहते हैं, catalyst कहते हैं, which carries the foreign DNA or gene of interest into another cell where it can be replicated. उसका replication होता है, वहाँ पे बहुत सारे copies बना सकते हैं और उसका expression भी हम करवा सकते हैं. So this is the vector, and vectors are very important things in rDNA technology. Now, what is an ideal vector? An ideal vector has following feature. Okay, what are the features of ideal vector? So vector should have the eligibility. What are the criteria to make an DNA molecule a vector? So it has a smaller size to manage. तो वेक्टर का साइज जो है तो छोटा होना चाहिए, जिसकी वजह से इसको हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं. सो द साइज ऑफ द वेक्टर शुड बी मैनेजेबल. दिस इज़ वन थिंग. इट हैज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. उसके ऊपर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसे ओरी साइट कहते हैं. इट हैज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स, दैट इज़ आरई साइट्स. सो वेक्टर्स शुड possess certain restriction enzyme sites where we can cleave the vector molecule and there we can insert our gene of interest. It has high copy number. इसका कॉपी नंबर भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि कभी कभी सिलेक्शन में हमें ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया उसका प्लाज्मिड नहीं मिलता है, तो ज़्यादा कॉपी अगर उसका रहता है तो वी हैव द बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग transformed bacterial plasmid. It has at least one marker for identification and selection of the integrated gene or gene of interest or transformed cell. So this is the most important thing. Vector should have a marker. तो ये marker जो होता है बहुत important होता है. तो ये mark करता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और इंसर्टेड जीन किस ट्रांसफॉर्म्ड सेल में है. बैक्टीरियल सेल दैट इज कैरिंग द वेक्टर एंड विच दैट बैक्टीरिया इज विच इज़ ट्रांसफॉर्म्ड. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये मार्कर होना चाहिए. सो देयरफॉर वेक्टर शुड possess a specific marker. So these are some important features and characters that a vector molecule should possess. अगर ये इसमें से कोई चीज़ अगर नहीं है
तो वो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो वेक्टर के तौर पे काम नहीं कर सकता है। तो ये इसकी पात्रता है, इसकी एलिजिबिलिटी है टू बिकम ए वेक्टर। तो एटलीस्ट ये मिनिमम इतने फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए। नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, because in rDNA technology there are different vectors, and these common vectors are as below. Number one, plasmid. It is a naturally occurring subsidiary DNA of bacteria. ये DNA जो का मॉलिक्यूल होता है, DNA का मॉलिक्यूल, it is subsidiary or secondary molecule in the bacterial cell. PBr 322, it is a modified E. coli plasmid. ये भी एक वेक्टर है, it is modified, उसका नाम है PBr 322. Another is PUC18, it is another modified PBr 322 plasmid. तो PBr 322 plasmid का modification करके ये PUC18, this PUC18 vector is prepared. तो इस प्रकार से हम लेबोरेटरी के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके हमारे पर्पज़ के लिए जो भी वेक्टर चाहिए उस प्रकार का वेक्टर हम बना सकते हैं। अनदर वेक्टर इज COSmids. These are hybrid vectors of Bacteriophage and Plasmid. So here you can see that we are making the hybrid vectors. So some part coming from virus and some part coming from plasmid, that is bacteria. तो इसका कॉम्बिनेशन बना करके we have developed this COSmids. तो ये भी एक वेक्टर होता है. Bacteriophage, it is a viral vector. So we are using this bacteria, some viruses, and these viruses can be used as vectors in rDNA technology. Plasmid, it is a plant bacteria, and that bacteria plasmid from Agrobacterium tumefaciens. So this is the very famous plasmid in plant manipulations or developing plant that are transgenic plants. Then we have YAC, 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 this artificially constructed shutter vector, isn't it? The yeast artificial chromosome, it is called yeast artificial chromosome. So this is another type of vector. And BAC, that is bacteria artificial chromosome. So it is also artificially constructed bacterial vector. So these are common types of vectors that are used in rDNA technology. So let us see one by one and let us have a cursory look at these vectors. So first, plasmids. Plasmids are small circular double-stranded extra chromosomal DNA molecules in bacteria. So as you know, the bacteria has a main DNA molecule, a long DNA molecule, and a small molecule DNA molecule, a secondary DNA molecule called plasmids. So therefore these plasmids are utilized in rDNA technology. They are secondary in nature and function for bacteria. So these plasmids are secondary in nature, isn't it? So there is a primary in the bacterial cell, and this plasmid is secondary kind of DNA. They may be single or many in number. So this plasmid may be single or in multiple. Okay. It can replicate independent of primary DNA. Plasmid can replicate itself autonomously. Plasmids act as vectors in rDNA technology that carry and transfer gene of interest into bacterial cell and further to receptor cell for cloning expression of the gene of interest. So this is the prime function of the plasmid. So here you can see that the plasmid can carry gene of interest and transfer this gene of interest into desired cell through the bacteria, and we can make the number of copies of
our gene of interest with the help of these plasmids. It acts as a catalyst for foreign DNA and for gene of interest. So it is a vehicle, isn't it? It is a catalyst. So therefore, this is the common type of vector called plasmid. So here is the figure. So you can see here, this is the bacterial cell, and this bacterial cell contains this DNA. This is the prime DNA, isn't it? This is the main DNA of the bacterial cell, and this is also DNA, but this is smaller in size. It is double-stranded circular DNA molecule called plasmid. So this plasmid is utilized in rDNA technology. तो यहाँ पर हमें ये ख्याल करना है कि ये जो प्लाज्मिड है ये मेन प्लाज्मिड है, ये मेन प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया का, और इसको मेन डीएनए कहेंगे हम, और ये जो है तो ये प्लाज्मिड है. ओके, सो दिस इज मेन डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ बैक्टीरियल सेल and this is the plasmid, that is secondary DNA, and these plasmids also contain certain genes. Okay, so this is the arrangement, and this plasmid we are utilizing in rDNA technology. So this is the figure of plasmid from the bacteria. So here you can see it has a promoter, it has a restriction enzyme site, and this restriction enzyme site is cleaved and gene of interest is inserted here. So here you can see the restriction site is cleaved and a space is created where our gene of interest is inserted, or it is an insert gene, isn't it? And this gene can be cloned, isn't it? There is selectable marker, antibiotic resistant gene, origin of replication site. So these are the common things that we observe in the plasmid. तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर कट किया गया है, isn't it? और ये रेस्ट्रिक्शन साइट कट करके यहाँ पर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया हुआ है, isn't it? You can see here, this is the blue segment is called gene of interest or insert gene, and this gene can be cloned. Now these are the selectable markers, antibiotic genes, these are used as markers. Okay, and this is the segment called site, origin of replication site, from where replication can take place. So this is the arrangement that we find in plasmid. Now another vector, that is PBR322. Its full form is Plasmid Bolivar Rodriguez. So P stands for plasmid, B stands for Bolivar, and R for Rodriguez. So these are the names of the scientists who constructed and prepared this plasmid, and 322 is the number given to this plasmid because there are number of plasmids in their laboratory, so they number this particular plasmid with 322. So what are the features of this plasmid? So PBR 322, it is a plasmid constructed by this scientist Bolivar and Rodriguez. It is modified plasmid. Certainly it is a modified plasmid in laboratory. It has newly restriction enzyme sites. So in laboratory, number of restriction sites has been introduced in this plasmid. Its copy number ranges from 20 to 30 copies per cell. It has two selectable markers, that is a resistant gene and tetracycline resistant gene. So these are the important features found in PBR 322. So here is the figure, you can see PBR 322. So this vector is having 4361 base pairs, isn't it? And it has this ampicillin resistant site
origin of replication site, tetracycline resistance site. And here in blue color, these are number of restriction enzyme sites. So here you can see it is indicated here. This is the specific site for ECO R1, isn't it? So ECO R1 restriction enzyme can cut here this particular DNA. Hint 3 can cut here. ECO R5 can cut here. BAM H1 can cut here. SAL 1 can cut here. PST1 can cut here. So these are the specific sites. These restriction enzymes can cut this vector. When cut is made at a specific site, we can insert of interest at these locations. Okay, so this is the construct of PBR 322. Now next, PUC 18, its full form is P stands for Plasmid, U for University, and C for California, and this 18 number is given to this particular plasmid in laboratory. So it is constructed in University of California, hence the name. It has MCS, that is multiple cloning sites, isn't it? This is the important feature of this PUC 18. It has LAC-Z gene, that is beta galactosidase gene, that is a lactose metabolism gene. So this LAC gene can metabolize lactose, and this LAC-Z gene is used as a selectable marker. LAC-R binding site is there, that helps in a lactose repressor gene, isn't it? So it controls the lactose metabolism, isn't it? This LAC-R binding site, that is LAC repressor gene, controls this lactose metabolism. Multiple cloning sites are there, that is MCS, which is also called polylinker. Okay, so this is the word you can see. It is synonymously used, that is MCS, multiple cloning site, that is polylinker. So this polylinker or MCS site is within beta galactosidase gene, that is LAC-Z gene. So this specific polylinker is situated within this LAC-Z site. AMPR, that is ampicillin resistant gene or site, is present. The polylinker has about 20 restriction sites. So these are the features, and here is the figure you can see. PUC 18, it consists of 2686 base pairs. So this entire vector consists of these much base pairs. It has ampicillin resistance site, it has origin of replication site, and here the important thing, that is LAC-Z gene. So this is the important site, and within this LAC-Z gene there is R binding site. So here you can see this polylinker, that is multiple cloning site, has these restriction enzyme sites. So these are the names of restriction enzymes, and these enzymes can make cut here, and after cutting and making a space in this vector, we can insert our gene of interest at these locations, isn't it? So these locations are placed adjacent to each other, isn't it? So different restriction enzyme sites. So this is the construct of PUC 18. So here you have to see these. This is the most important in LAC-Z gene, and within LAC-Z gene there is MCS, that is multiple cloning site, and these are the restriction enzymes that can cleave at this location. So this is the significant feature of PUC 18. Now COSmid. So COSmid has a cohesive site of lambda phage and
plasmid. So it is a uh, hybrid type of vector. So it has a cos site into a plasmid. So plasmid and cos site together forms COSmid. So it is a hybrid kind of vector. So here I have shown you cohesive ends of bacteriophage, that is cos site, plus plasmid of E. coli. So here you can see this cos site is coming from a virus, that is Lambda, that is combined and integrated with the plasmid of E. coli. So cos and mid becomes COSmid. Right. So this is the important thing, cos site and this mid plasmid, it becomes COSmid. So it is a hybrid vector. Cos sites are for circularization of plasmid and packaging of bacteriophage head. So these cos sites are derived from viruses. It is a cohesive sites forming a sticky ends, and due to sticky ends the vector can be circularized. It becomes circular and it can be packaged into the bacteriophage head for infection to the bacterial cell. So we are using this viral infectivity to the bacteria in our rDNA technology through these COSmids. Cos site is used to package into phage along with foreign gene. That foreign gene means gene of interest. So here you can see this word foreign gene means our gene of interest. So this word you have to remember. So gene of interest. So we are synonymously using this word. So here is the use of this cos site. It has polylinker, that is multiple cloning site. It can clone large DNA molecule of 45 kb. So the capacity of this vector is enhanced, isn't it? So here you can see the COSmid can clone larger segments of DNA, that is 45 kb segment of DNA. So here is the figure. I have drawn this figure. Here you can see the important thing in this PBR322 vector. So PBR322 DNA, this is the molecule of PBR322, and here in this PBR322 you can see a cos site of 12 base pair from Bacteriophage has been introduced. So here you can see a kind of complementary ends are meeting together, isn't it? So these are the cohesive ends, isn't it? So here you can see this is the cohesive ends, they are complementarily matching to each other, and this specific site is derived from the virus called Lambda-phage. As usual, you can see here ampicillin resistant site, tetracycline resistant site, and origin of replication site. And here I have shown one restriction enzyme site, that is BAM-H1, isn't it? So here we can clue this vector. So this is the simplified construction of a COSmid, isn't it? This is another figure. Here I have shown the polylinker. So in previous figure I have not shown the polylinker. So here you can see this polylinker, isn't it? So this is the COSmid. Now bacteriophage, virus that infect bacteria. So we are using the bacteriophage virus in rDNA technology. Bacteriophage, virus that attacks bacteria. So therefore it is called bacteriophage, the virus that attacks on the bacteria and destroy that bacteria ultimately. Such virus is called bacteriophage. It attach bacterial cell
identifying its maltophorin. So maltophorin is a kind of protein which is present on the surface of bacteria. So the virus identifies this maltophorin for its attachment and then it infects to the bacterial cell. तो यहाँ पर ये माल्टोपोरिन जो होता है ये प्रोटीन होता है जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेज वायरस उस बैक्टीरिया को उसके सरफेस को आकर के अटैच हो सकता है, isn't it? It infects to the bacterial cell by injecting its nucleic acid. So that is the phenomenon. After infection, the virus injects its nucleic acid into the bacterial cell. Then it opts for either lytic or lysogenic pathways after infection for its reproduction. तो ये वायरस जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, तो खुद का रिप्रोडक्शन करेगा ये वायरस थ्रू आइदर लाइटिक और लाइसोजेनिक पाथवे. तो ये दो पाथवे होते हैं जिसकी वजह से वायरस खुद को रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर. सो देयरफॉर दिस इज द मेथड यूटिलाइज्ड by the virus for its own reproduction. Infective capacity of the bacteriophage through transduction is harnessed in rDNA technology. So this infective capacity of the virus is used in rDNA technology. तो हमने ये देखा है कि ये वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है और इन्फेक्ट करता है, तो उसका वो कैपेसिटी हमने rDNA टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया है. So here you can see the figure of bacteriophage virus. It has head and tail. So head consists of capsid, है ना, ये capsid है, उसका head जो है ना ये covering है capsid. It consists of protein. There is DNA molecule. It is a nucleic acid. It has collar, fibrous or bristle like whiskers. Is that it? It has a sheath that is called tail tube. That it is a contractile sheath. ये contraction होता है spring के तरह. It has basal plate and spike for attaching and injecting the nucleic acid. It has tail fiber, and these tail fiber help to attach the virus to the bacterial surface or bacterial wall. So this is the construction of बैक्टीरियोफेज. तो आप देख सकते हैं कि एक कीड़े की तरह इसका अरेंजमेंट है और इसके पास ये टेल फाइबर है जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल सेल को अटैच हो सकता है. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द इलस्ट्रेशन. सो दिस इज बैक्टीरियल सेल, द बैक्टीरियल जीनोम. तो यहाँ पे बैक्टीरिया का जीनोम है, बैक्टीरिया का डीएनए है, एंड दिस वायरस is attached to the bacterial cell, identifying its maltophorin, which is a specific proteins present on the surface of bacterial cell. So with the help of this tail fibers, this bacteriophage attaches to the bacterial cell. Now here you can see this is the viral RNA or DNA. So the viral nucleic acid may consist of either RNA or DNA. So here you can see this nucleic acid of virus. Now this virus after infection to the bacterial cell pumps its nucleic acid into the bacterial cell. So here you can see the head is empty now, isn't it? So this nucleic acid or genetic material of virus is pumped into the bacterial cell. So viral genome injected into the bacterial cell. So now here you can see the action, isn't it, of this sheath, contractile sheath. Now this sheath is contracted, and just like a syringe, the material, that is nucleic acid, is injected into the bacterial cell. So after injection of this viral genome into the bacterial cell, this viral genome takes the control of the bacterial cell, where this viral particles reproduces in abundant numbers. बहुत सारे वायरल पार्टिकल इसके अंदर खुद का रिप्रोडक्शन करवा लेते हैं. और ये जो कैपेसिटी है वायरस का,
दिस कैपेसिटी इज़ यूज्ड इन rDNA टेक्नोलॉजी। यही जो कैपेसिटी है वायरस का इन्फेक्ट करने का और ख़ुद का जो न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए, खुद का जो डीएनए है वो इंजेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वायरस का, वो हमने rDNA टेक्नोलॉजी में यूज़ किया है। सो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज वी कैन कैरी ऑन आवर ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वायरस और बैक्टीरियोफेज यहाँ पर काम करता है। देन अनदर वेक्टर दैट इज TI plasmid. So this TI plasmid is present in Agrobacterium tumefaciens. It is a gram negative bacteria. It is pathogenic to certain plants, and this bacteria produces tumor in plants. तो ये एक बैक्टीरिया है Agrobacterium tumefaciens. So here you can see this is the Agrobacterium tumefaciens with its bacterial chromosome, that is main DNA, and this is the secondary DNA of this bacteria called TI plasmid. So tumor inducing plasmid, and this TI plasmid has a small segment which is important for production of tumor, is called tDNA. So this is Agrobacterium tumefaciens. तो ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया है and this bacteria occur in soil. So this bacteria infects to the plant and produces a tumor. So here you can see this is the plant, and this is the crown region of the plant. So the region which is lying between this aerial part of the stem and the adjacent to the soil. तो यहाँ पर ये रूट और ये ऊपर का जो हिस्सा है स्टेम का, इसके बीच में जो रीजन है विच इज़ टचिंग टू द ग्राउंड, टचिंग टू द सॉइल, इज कॉल्ड क्राउन रीजन. तो ये रीजन के ऊपर यहाँ पर अगर प्लांट को वुंड होता है, ज़ख्म होती है, तो ये बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्ट करती है प्लांट को थ्रू दिस वुंड. ये ज़ख्म के अंदर से ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस गेट्स एंट्री इनटू द प्लांट बॉडी. और जब ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जाएगा, इट विल प्रोड्यूस ट्यूमर दैट इज कॉल्ड क्राउन गॉल, क्योंकि ये क्राउन रीजन है, ये जो पोर्शन होता है इसको क्राउन कहते हैं, और ये गॉल बोले तो ट्यूमर. सो दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस प्रोड्यूस ए ट्यूमर, ए कैंसरस ग्रोथ इन दिस रीजन ऑफ द प्लांट. तो ये कैसे होता है? बिकॉज दिस tDNA और TI प्लाज्मिड, ये TI प्लाज्मिड की वजह से यहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन होता है ये प्लांट के अंदर. सो हियर यू कैन सी दिस enlarged plant cell, transformed plant cell, and here you can see this is the DNA of this host plant. ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये DNA of host plant, and this red segment is the small DNA, that is tDNA, coming from the Agrobacterium tumefaciens TI plasmid. तो TI plasmid का ये small portion है tDNA which is integrated into the plant DNA. जब ये integrate हो जाता है तो it produces such tumors in the plant. तो इसकी वजह से ये ट्यूमर यहाँ पर डेवलप होता है. Is it? So this infective capacity of this TI plasmid from bacteria has been utilized in our rDNA technology. Okay, so here you can see this TI plasmid has its own small DNA which is called TI plasmid. So this TI plasmid means tumor inducing plasmid. So its size is 15 to 30 kilobase. It cause tumor to the plant at crown region, जैसा मैंने आपको बताया. It has tDNA, that is called transfer DNA segment, which is transferred to the host plant cell and integrates with it. So TI plasmid has tDNA. It is a small segment, and this segment is transferred to the host plant cell where it integrates with the plant genome.
and initiate crown gall. It has right and left border that help in transfer of tDNA into host and tumor genesis. तो ट्यूमर फॉर्मेशन में राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर का रोल होता है, isn't it? तो यहाँ पर ये राइट बॉर्डर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन. Then tDNA carries genes for biosynthesis of auxins, cytokinins and opines. So this tDNA region of the Ti plasmid has auxin, cytokinin and opine producing genes. वो वहाँ जा कर के ये प्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर. It produces a certain special amino acids called opines. So opines are of two types, that is octopine and nopaline. So these are the special amino acids useful for bacteria only. So these amino acids are produced after infection into the tumor, and these opine and nopaline, octopine and nopaline are useful only for bacteria. It is not useful for the plant. Plant के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, ये बैक्टीरिया की ही काम की चीज़ है. It has virulence region that causes infective transfer of tDNA to the host cell. So this Ti plasmid has this virulence region. तो ये virulence region इन्फेक्शन करने के लिए काम आता है. This Ti plasmid is used in rDNA technology for the production of transgenic plant. तो transgenic plant तैयार करने के लिए ये Ti plasmid जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में होता है उसका यूज़ ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में हम करते हैं, isn't it? rDNA टेक्नोलॉजी में we are producing this transgenic plants. So here is Ti plasmid, and it has this specific tDNA region. So you can see here, this is the tDNA region, isn't it? It has left border, it has right border, and there are sites of auxin, cytokinin and opine production. So this opine genes produce this octopine and nopaline, isn't it? It has opine metabolism. जो ओपाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए वो यहाँ ये जो जीन्स है ये प्रोड्यूस करते हैं. ओपाइन मेटाबॉलिज्म इसका यहाँ पे होता है, isn't it? This is ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन इज़ देयर. सो उसका जो कैटाबॉलिज्म होता है ओपाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए और उसका कैटाबॉलिज्म ये जीन के मार्फत होगा. सो इट हैज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट हैज़ वायरुलेंस रीजन, isn't it? So these are the specific arrangement of Ti plasmid. तो ये Ti plasmid है from agrobacterium tumefaciens, isn't it? और ये tDNA जो रीजन है दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. तो इतना जो रीजन है ये जा कर के होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, अटैच हो जाता है और वहाँ पे ट्यूमर प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज़ द Ti plasmid. Then yak, that is yak, yeast artificial chromosome. It is also called plasmid yak. So yeast artificial chromosome. So the name itself indicates that it is artificially constructed vector from yeast cell, isn't it? जो yeast cell होता है वहाँ से ये लिया गया है. Yeast artificial chromosome yak is shuttle vector produced by कंबाइनिंग बैक्टीरियल एंड ईस्ट जीन्स. तो ये भी एक कॉम्बिनेशन करके हाइब्रिड किस्म का वेक्टर बनाया गया है. सो इट हैज़ जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज जीन्स फ्रॉम ईस्ट. इट कैन बी क्लोन्ड इन बैक्टीरिया एज वेल एज इन ईस्ट सेल. तो इसका क्लोनिंग बैक्टीरिया में भी हो सकता है और ईस्ट सेल में भी हो सकता है. इट हैज़ बैक्टीरियल एंड ईस्ट सिलेक्टेबल मार्कर. तो दोनों तरफ ये काम कर सकता है, बैक्टीरिया में भी ये काम कर सकता है और इस सेल के अंदर भी काम कर सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग देर आर सिलेक्टेबल मार्कर्स. 2 cleavages are required to introduce foreign DNA into the yak. So this yak or yeast artificial chromosome needs to cleave at 2 locations to insert our gene of interest or foreign DNA. Then large segment
DNA up to 200 kb to 10 MB could be cloned in yak। तो याक का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है 200 से लेकर 10 MB तक, 200 kb से लेकर 10 MB तक का बड़ा मॉलिक्यूल क्लोन कर सकता है। तो इतना इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए स्पेसिफिक याक इज़ यूज्ड इन जीनोम प्रोजेक्ट, इज़न्ट इट। जीनोम के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे डिसीजेस के लिए उसका स्टडी करने के लिए भी याक का उपयोग होता है। देन देर आर टीलोमर्स एंड टीलोमर ऑफर लिनियराइजेशन एंड स्टेबिलिटी टू द याक। तो इसके अंदर टीलोमर्स होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम में होते हैं उस प्रकार के टीलोमर्स भी होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से लिनियराइजेशन हो सकता है और उसको स्टेबिलिटी भी मिल सकती है। देन इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर क्लोनिंग यूकैरियोटिक जीन्स। तो यूकैरियोटिक जीन्स बड़े होते हैं और उसको क्लोन करने के लिए ये बहुत ही सुटेबल है। इट कैन बी क्लोन इन यूकैरियोटिक, that is yeast cell, and prokaryotic, that is bacterial cell. Hence it is called shuttle vector, isn't it? Why it is called shuttle vector? Because it can be cloned in eukaryotic cell, इस सेल के अंदर भी ये क्लोन होता है, और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल के अंदर भी होता है, इसीलिए इसको कहते हैं शटल वेक्टर। इट कैन बी क्लोन इन सर्कुलर इन बैक्टीरिया और इन लीनियर मोड इन ईस्ट। तो दोनों मोड में ये इसका क्लोनिंग हो सकता है, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड शटल वेक्टर। सो दिस इज़ याक। देन ये जो याक होता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या क्या साइट्स है? सो यू कैन सी हियर इट हैज़ ARS, दैट इज़ एटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस फॉर यूकैरियोट्स। सो ARS साइट होता है इसके अंदर। देन इट हैज़ ORI, दैट इज़ origin of replication site in prokaryotes. Then it has sen, centromeric sequence, so it is shown here, sen, you can see here sen, ये भी sequence इसके अंदर दिखाई पड़ता है। Then it has tel, that is telomeric sequence, isn't it? Here you can see this telomeric sequence, isn't it? दो telomeric sequences है, so this is an important thing. Then it has marker A, B, screenable genes. So here you can see this marker A and B, isn't it? ये भी है। It has ampicillin resistant gene, ampicillin resistant gene भी इसके अंदर है, isn't it? Here you can see ampicillin resistant gene. Then it has BAM-H1, that is a restriction enzyme site, isn't it? BAM-H1, here you can see दिस BAM-H1 साइट इज़ हियर। यहाँ पर BAM-H1 नाम का एंजाइम जो है यहाँ पर कट कर सकता है, क्लीव करता है बिटवीन दिस टीलोमेरिक रीजन्स। सो दिस BAM-H1 विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम Bacillus amyloliquefaciens बैक्टीरिया। देन इट हैज़ EcoR1 restriction enzyme site, isn't it? यहाँ पर बताया है EcoR1, that is जैसे एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम Escherichia coli बैक्टीरिया। It has SUP4 insertionally deactivated suppressor gene for red color in yeast cell। तो यहाँ पर SUP4 जीन बता है। तो SUP4 जो जीन होता है वो ईस्ट को स्पेसिफिक रेड कलर पिगमेंट देता है। तो रेड कलरेशन आता है, थोड़ा सा रेडिश कलर जो ईस्ट सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ ड्यू टू द SUP4 जीन। और उसके ऊपर ही वहाँ SUP ये सीक्वेंस के ऊपर ही SNAB1 SNA-B1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट जो है, तो यहाँ पर जब हम कट लगाएंगे SUP रीजन के अंदर, तो यहाँ पर ये SUP का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं होगा, यानी कि रेड पिगमेंटेशन नहीं होगा। तो ये मार्कर के तौर पे काम करता है, इज़न्ट इट? तो इसीलिए इसे कहते हैं कि इंसर्शनल डीएक्टिवेटेड सप्रेसर जीन फॉर रेड कलर इन ईस्ट सेल। तो यहाँ पर हम कट करके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं, और जिसकी वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है SUP जीन का।
or it acts as a screenable marker. So here you can see this SNAB1, SNAB1, isn't it? ये bacteria जो है, isn't it? Here you can see bacteria, isn't it? Shirotellus natans, isn't it? Shirotellus natans नाम का ये बैक्टीरिया है, इससे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्ना मिलता है, isn't it? SNAB1. So वो यहाँ पर कट करता है SNAB1, isn't it? So this is the important feature of yak. Then BAC, that is bacterial artificial chromosome. So this is also a modified and artificially constructed chromosome. It is constructed using functional fertility plasmid called F plasmid of bacteria by Mel Simon and et al. In 1992. तो ये जो है तो F फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर का इस्तेमाल करके ये बैक जीन बनाया गया है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. इट क्लोन्स लार्जर इंसर्ट ऑफ यूकैरियोट दैट इज 150 to 300 किलो बेस पेयर. तो इसका भी कैपेसिटी अच्छा है. इट हैज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट दैट इज ओरी साइट. इट हैज़ ए रेप ई जीन दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रेगुलेशन ऑफ कॉपी नंबर. तो ये जो जीन है ये रेप्लिकेशन करता है प्लाज्मिड का और उसका कॉपी नंबर भी रेगुलेट करता है. सो पार ए, पार बी, पार सी जीन्स. ओके, सो पार्टीशन ए, पार्टीशन बी और पार्टीशन सी जीन जो होते हैं ना, इट इज़ फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड इन डॉटर सेल. तो जब ये प्लाज्मिड जो है, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है, जब इसका डिवीजन होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल में इक्वल तरीके से होना है. तो उसके लिए ये जीन काम करते हैं, isn't it? पार ए, पार बी एंड पार सी जीन्स. देन इट हैज़ MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स और पॉलीलिंकर. सो दिस पॉलीलिंकर MCS इज प्रेजेंट विद इन द LAC-Z जीन. तो इसके अंदर भी LAC-Z जीन है और उसके ऊपर दिस मल्टीपल क्लोनिंग साइट है या पॉलीलिंकर है. ट्रांसफ़र ऑफ इंसर्टेड जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर कुड बी अचीव्ड थ्रू बैक. सो बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है, इट हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसफ़र इट्स artificial chromosome from one bacteria to another bacteria through this fertility plasmid. तो ये fertility plasmid जो होता है तो ये कॉन्जुगेशन के दरमियान होने वाली प्रक्रिया है. तो जब दो बैक्टीरिया यानी कि F+ एंड F- बैक्टीरिया कॉन्जुगेट हो गए तो वहाँ पर ये एक्सचेंज होगा ये जीन्स का. तो ये कैपेसिटी भी हमने यहाँ पर rDNA टेक्नोलॉजी में यूज़ की है, इज इट. तो बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन कैपेसिटी है विच इज़ रिलेटेड टू फर्टिलिटी, इज इट. F प्लाज्मिड एक्टिविटी है एंड दिस एक्टिविटी हैज़ बीन हार्नेस्ड इन rDNA टेक्नोलॉजी. कंस्ट्रक्शन ऑफ जीन लाइब्रेरी जीनोम सीक्वेंसिंग कुड बी डन. तो ये बहुत काम की चीज़ है. अभी ये जीन सीक्वेंसिंग, जीन लाइब्रेरीज, इजंट इट, जीन मैपिंग, इसके लिए ये बैक यूज़ किया जाता है. So therefore it is very important. It has chloramphenicol gene as a marker. तो इसके अंदर chloramphenicol gene है that acts as a marker. So here you can see this is the figure of a back vector, isn't it? It has this ori site, origin of replication, this rep E site. तो rep E site जैसा मैंने यहाँ बताया कि ये जो साइट है, replication of plasmid and regulation of copy number of this plasmid. इसका copy number regulate करता है. Chloramphenicol resistance site is there. ये LAC-Z site, and this LAC-Z site has this polylinker. तो बहुत सारे enzymes यहाँ पर है, restriction enzymes. I have shown some of these enzymes जैसा कि hint3, BAM-H1, SPA1. तो ये जो restriction enzymes है यहाँ कट लगा सकते हैं विद इन दिस LAC-Z साइट और ये स्क्रीनेबल मार्कर की तरह ये काम करता है.
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. It has a par C, par B, par A sites for distribution of equal distribution of daughter सेल के अंदर इसका जो वेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डॉटर सेल के अंदर उसको रेगुलेट करने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए these genes are present there. So this is bacterial artificial chromosome. So इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारे वेक्टर्स जो है they are important in rDNA technology. So hope you understood this presentation, and I recommend that you view this presentation repeatedly and prepare your own notes. Okay, thank you.